Assalamu alaikum, this is Amer Qureshi. Thank you for joining me for my video blog. This video blog में and the following two, we'll be talking about presentation and communication skills. How can you make an impact through your presentations and create the wow when you're making a pitch or when you're presenting at one of your meetings. The secret to any successful presentation is to prepare. और preparation के लिए, I suppose one easy way to remember are the 4 W's. Who are you presenting to? किसको आपने ये presentation करनी है? What is the message? What is the core message जो आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं? Where will the presentation take place? And when will it take place? And it's important to know how much time you will have. उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं. And how are you going to present it? Is it going to be a presentation using PowerPoint slides? Is it going to be online using Zoom? ये सारा कुछ जो है आपके लिए बहुत important होता है to know, and then you plan according to that. So आपकी तैयारी हो गई. You've done the preparation and now it's time for actually making the presentation. So there are some really important things you have to keep in mind. First of all, it's important जब आप सबके सामने जाते हैं, you need to make sure that you are dressed properly, you're wearing the right type of clothes, the colors are very important. Essentially आम तौर पे कहा जाता है blue is a very conservative color and in order to build credibility इसको recommend किया जाता है. Non-verbal communication जो है presentation में बहुत important होती है. तो जो आप बात कर रहे होते हैं that has to be in alignment with जिस तरह से आपकी body language जो message दे रही होती है. बहुत important है, the two should be in sync because your message will be enhanced if the two are synchronized. On the other hand, confusion होगा audience के लिए if your body language does not match your verbal message जो आप देना चाह रहे हैं. It's also important to use your voice effectively. अपनी voice को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, उसको project कर सकते हैं. And it's important to have variation in the pitch and the tone of your voice. जिस तरह मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आवाज़ आहिस्ता कर दी है. You can also use pause. थोड़ी देर की pause भी देते हैं in order to create impact, in order to keep the audience guessing. These are all the techniques जो professional presenters हैं वो बहुत effectively उसको use करते हैं. Similarly, eye contact जो है अपने audience के साथ बहुत ज़रूरी है. It doesn't mean कि आप अपनी audience के साथ एक staring contest शुरू कर दें, but it's important कि आप उनकी तरफ देखें, उनके साथ eye contact करें और सारा जो आपका audience है, सारा जो people who are listening to you, उन सब के साथ progressively eye contact करने की ज़रूरत है. उससे आपको feedback मिलता है whether people are understanding the message you're trying to convey or are they interested, और अगर कुछ issues आ रहे हैं then you can address those during your presentation. If you see anyone falling asleep, then you know you need to change your tack a little bit. हमने टोन ऑफ वॉइस की बात की है, हमने पिच की बात की है एंड हमने ये भी बात की है कि आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका पोस्चर होता है, द वे यू स्टैंड, द वे इफ़ यू आर स्टैंडिंग एंड प्रेजेंटिंग, इसको हम कहते हैं हैविंग अ न्यूट्रल बॉडी स्टैंस. यानी कि आप अपने हैंड्स शुड नॉट बी इन योर पॉकेट्स, हैंड्स शुड नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस. आपको एक न्यूट्रल सी पोजीशन लेनी पड़ती है. यू नीड टू बी इन द सेंटर ऑफ द रूम इफ़ द रूम इज़ अ बिग रूम एट्सेट्रा. तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, the way you carry yourself, the way you conduct yourself creates a really important impact in terms of presentation. You have to watch out for all of those things. जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, the ultimate success in presentation comes from the amount of practice that you can do. You need to practice until such time as you know the presentation inside out. Without referring to notes, without looking at the slides, you should be able to make that presentation. The ultimate ingredient to success for a successful presentation are the 3 P's. Preparation, and more preparation. किसी भी presentation से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप practice करें until such time as you know the material really well. और ये presentation बहुत तरीक़ों से की जा सकती है. आप अपने वीडियो बना सकते हैं. You can present in front of a mirror. You can time yourself presenting. You can use tools within Microsoft PowerPoint to time your presentation because practice की वजह से ही आपकी presentation improve होगी. I'll be back with the next part of this video blog and with more tips and advice on how to make impactful presentations. Thank you for joining me. This is Amer Qureshi.